Dear students, today we will discuss the topic from chapter number 5, learning, and our today's topic is theories of learning. Right? अब तक तो देखिएगा आप लोग कंडीशंस ऑफ लर्निंग और लॉज ऑफ लर्निंग, मेथड्स ऑफ लर्निंग के बारे में चुके हैं. तो आज हम लोग थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि आखिर में ये थ्योरीज क्या हैं. Actually, the research of the experts gave rise to two types of theory. The first one is the behavioristic theory, and the second one is the cognitive theory of learning. First, you will know that what is the behavioristic theory. So, the behavioristic theory takes learning as the visible change in behavior. They perceive that what type of task one can do with what changes in behavior, both visible and operational. So, they understand that if there is a stimulus, there would definitely be a response. And the learning to them is a pattern of reaction to a stimulus what one learns. ठीक है. बिहेवियर की जो जितने भी जो इसको मानने वाले बिहेवियरिस्ट है उनके नज़दीक इंडिविजुअल जो होती है ना, उनको लर्निंग को कैसे देखते हैं कि ज़ाहिरी किरदार में, ज़ाहिरी जो आपका किरदार होता है ना उसमें जो चेंजेस होती हैं उसकी सूरत में इसको समझा जा सकता है और उसके साथ ही इसको वो बयान किया जा सकता है. इनका ये ख्याल है कि एक इंसान जो है, एक इंडिविजुअल जो है, उसकी लर्निंग को सिर्फ इस अंदाज से समझा जाता है कि वो ज़ाहिरी तौर पर क्या काम अंजाम देता है, उसकी पर्सनालिटी में क्या तब्दीलियाँ जो होती हैं वो ज़ाहिर होती हैं और वो जो है लर्निंग का क्या उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल होता है वो क्या आता है. ये जो बिहेवियरिस्ट है वो ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल वही कुछ करता है जो वो किसी स्टिमुलस के रद्द-ए-अमल के तौर पर वही कुछ सीखता है. ठीक है. इंडिविजुअल का हर काम जो होता है उसकी जो स्टिमुलस होती है ना उसके साथ वो कंडीशनड हो जाता है और वो जब स्टिमुलस बार बार उस इंडिविजुअल पर इफ़ेक्ट करती है तो इंडिविजुअल की तरफ से भी उसका जो हम कह सकते हैं कि उसके रिस्पॉन्स में ज़्यादा पुख्तगी पैदा हो जाती है और इस तरह इसका इंडिविजुअल का ये जो रिस्पॉन्स होता है, ये उसका रद्द-ए-अमल जो होता है, ये उसके किरदार में मुस्तकिल तब्दीली का बायस बन जाता है. एंड बिहेवियरिस्टिक सेज दैट द एक्सपीरियंसेस एंड द अकरेंस over the time develop a specific relationship between the reacting and fixated. They call this process as stimulus and response relationship, and the way that relationship exists is conditioning. इसके लिए आप लोगों ने वो थॉर्नडाइक की या पैब्लो वाली वो आप लोगों ने पढ़ी हुई है. डिफरेंट किस्म की उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं जो उन्होंने एनिमल्स पर किए हुए हैं. तो इस तरीके से जो माहिरीन नफ्सियात हैं इसको मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ के ज़रिए से, कनेक्शन के ज़रिए से इसको पेश करते हैं, जिनमें से ये तीन जो हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज़म है. फिर थ्योरीज ऑफ लर्निंग में जैसे कि फर्स्ट वन जो थी वो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग थी, तो जो सेकंड वन है वो है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग. कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या कहती है? इसके जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं द फॉलोअर्स ऑफ दिस थ्योरी बिलीव दैट इट इज़ नॉट द बिहेविंग पैटर्न, रादर इट इज़ द कॉग्निशन दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लर्निंग. यानी कि वो लोग तो कहते थे कि जो बिहेवियर होता है ना वही लर्निंग का पैटर्न है, कि बिहेवियर से जो शो हो गया तो हमें पता चलेगा बिहेवियर चेंज हो गया उस बंदे का, ऑपरेंट बिहेवियर जो है तो हमें पता चलेगा लर्निंग हुई है. लेकिन ये उसके ऑपोजिट है. ये जो किसको बेस समझते हैं? कॉग्निशन दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ लर्निंग. मेंटल एबिलिटीज, इमोशंस, एटीट्यूड्स, परसेप्शन डिटरमिन which way one should respond to a specific stimulus. So to them, thinking, attitude and ability to respond develop a specific visible behaving pattern, and this pattern is not only associated with these only, but it does have the impact of the environment also. In environment there are very many stimulus but are all of not selected to be responded to. So the selected stimuli are selected to respond to. In this process, the thinking process, first of all your thinking would be changed, which would be seen in the behaving pattern, and then the visible behavior is the cause of inner change and changes of thinking. ये इसको जो मानने वाले बिहेवियर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये जो जहनी सलाहियतें होती हैं हमारी, जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारा एटीट्यूड होता है, ये जो है ना ये हमारी लर्निंग को तयन करता है कि वो किस स्टिमुलस का जवाब किस सूरत में देगा.
اور اس نظریے کے جو یہ ماہرین ہیں نا وہ انڈیویجول کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اس کے جو رجحانات ہیں اس کو جواب دینے کی جو استطاعت کو لرننگ کی بنیاد بتاتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے نا کہ جو انڈیویجول کی سوچ اور اس کی جو تھاٹس اور اس کی جو فکر اور اس کی جو اس میں چینجز آتی ہیں وہ ایک انسان کی ظاہری جو کردار ہوتا ہے اس کو متاثر کرتی ہیں، یعنی کہ ایک اس انڈیویجول کا ظاہری کردار اس کی کیفیت جو ہے وہ اس کے سیکھنے پر ہوگی، جو اس نے اپنے مختلف قسم کی سوچ اور رجحانات سے سیکھا ہے۔ اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول سیکھنے کے عمل میں اپنے پورے کے پورے ماحول پر غور کرتا ہے، ٹھیک ہے، ماحول میں موجود تمام اسٹیمولس، تمام ایکسپیرینس، تمام واقعات میں وہ اپنی ذہنی فکر اور اس کی استعداد کے مطابق ایک کنیکشن قائم کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو وہ مطلب لا کر اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ جو موسٹ کامن کوگنیٹو تھیریز ہیں، جیسے بیہیویئرسٹک تھیوری میں ہم نے پڑھی تھی کہ تھارنڈائک کی ہے، اور اس کے علاوہ پیولو کی ہے، اسی طرح سے کوگنیٹو تھیوریز جو ہیں وہ ہیں گیلسٹرٹ theories of learning, knowledge analysis theory of learning, insight theory of learning and the structural theory of learning۔ اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں نے نہیں دینی ہے، بس جسٹ ان کے نیمز لکھنے ہیں آپ لوگوں نے، کیونکہ سائیکالوجی میں آپ لوگ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پھر کریں گے جو سی تھیوریز اس سے مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس ہمارے چیپٹر کا اینڈ ہوا ہے، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔